हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टॉकवर्स। आज थोड़ा स्पोर्ट चेंज करते हैं। आज हम लोग फुटबॉल के नहीं क्रिकेट की बात करेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स आईपीएल इज स्टार्टिंग एंड क्रिकेट है वो एट द एंड। दिस स्पोर्ट इज नॉट जस्ट अ स्पोर्ट इन आवर कंट्री, इट्स अ रिलीजन एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, व्हाई नॉट। सो आईपीएल डे 2 and one crazy match is there, that is KKR versus Sunrisers Hyderabad. And of course जब भी कोलकाता खेलता है it has a huge potential because वो लोग का स्क्वाड बहुत मस्त है. There is always crazy beautiful cricket that comes from them and they didn't disappoint this time either. So KKR choose batting and they started really well. Salt ने मचा दिया. Second या third over में ही उसने सीधा sixes का हैट्रिक मारा and everyone thought कि oh KKR is gonna hit really hard and really high. बट फिर सनराइजर्स बोला कि यार ऐसी क्या बात है, हमें भी तो बॉलिंग आती है, हम भी तो करेंगे कम बैक. एंड सनराइजर्स हिट देम हार्ड. सनराइजर टुक अराउंड 3 विकेट्स इन 32 रन्स विच वॉज क्रेजी. एंड इस पर सबको लग गया था कि ओ माई गॉड दैट्स ए ह्यूज हिट, शायद अभी केकेआर डाउनफॉल में जाएगा. बट इट वॉज अ बिट बैलेंस. थोड़ा बहुत वो लोग केकेआर ने सेटल होने का ट्राई किया बट वापस 54 for 4 कर दिया सनराइजर्स ने. सॉल्ट वॉज स्टिल प्लेइंग, सॉल्ट वॉज स्टिल डूइंग वेल, बट थोड़ा टफ टाइम्स दिख रहा था केकेआर के लिए. स्टिल दे वर प्लेइंग, दे मेंटेन्ड अ डिसेंट रन रेट एंड चल रहा था. आफ्टर दैट सॉल्ट गॉट आउट. उसने एक बहुत रिस्पेक्टेबल गेम खेला, 53 रन इन 38 बॉल्स विच वॉज ग्रेट. बट सबको लगा कि यार हो गया, ये एक प्लेयर था जो बहुत सेट था, अब ये गया, नाउ देयर इज नो वन टू केयर ऑफ एंड नाउ वी कैन सेटल द गेम. बट नो, यही वो लोग का सबसे प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो था. बिकॉज देन केम इन Russell the monster, Russell the muscle as he's called. And यार तुम लोग देखो बंदे को, it seems like he's a person straight out of WWE. Crazy stature, crazy body, and he played that way. The balls were flying out of the field left, right and center. एंड मज़ा आ गया वो देख के. रसल ने तो बहुत क्रेजी एक गेम खेला है, उसकी इनिंग्स ऑन पॉइंट है, टॉप नॉच थी. ही स्कोर्ड एंड हाफ सेंचुरी इन जस्ट 20 balls. एंड बाय द टाइम एवरीथिंग एंडेड, of course, Rinku Singh and Ramandeep played well to assist him to keep the runs going, and of course वो लोग ने भी अपने कुछ बड़े hits किए. But at the end they took KKR to a very respectable, very outstanding 208 for 7. सोचो तुम लोग, जो टीम अराउंड 54 for 4 था वो 208 स्कोर किया, विच इन T20, विच इन IPL इज अ ग्रेट एंड ब्यूटिफुल स्कोर टू डिफेंड. Of course, Sunrisers had a mountain to climb and a task to do, but वो लोग आए भी वैसे ही. They came in as if they are gonna chase the score and they are going for the win. And उनके openers ने फाड़ दिया. वो लोग मस्त खेले. Their openers Mayank and Abhishek scored 60 runs in just 32 balls. Great, मस्त एक 10-11 का run rate था. Perfect. After that, they played well until 72 runs, but after that, both of them got out. SRH का high hopes था both from Markram and Tripathi, but both couldn't do much and वो लोग दोनों का भी विकेट निकल गया. And by both scoring around 18 and 11 runs, 4 wickets down था. SRH was in a tough zone, but then came their lifesaver, their god, Klassen. Klassen was like यार रसल का तो देख लिया मैंने, अब तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ मैं क्या चीज़ हूँ और मुझे क्या आता है करने को. And Klassen came in hard. He scored around 55 runs in 25 balls. मस्त उसने अपना एक हाफ सेंचुरी स्कोर किया. He brought the game back in. Rather, he brought the game so well कि at the end, in the final over, it was around 4 balls, 6 runs. Sadly, Klassen was on the non-strike end. It was still very much doable. वो कहाँ पे मैच जा चुका था, उसके बाद उसने more or less winnable पे ला दिया था. एक सिक्सर and the game is theirs. Or just score some good runs. That's it. But KKR knew how to close them. Second ball of last over, first wicket. Fourth ball पे Klassen को strike मिलता है and he gets out. And that's where it was really tough because now it was 2 balls 5 runs. Not easy, of course not, but still maybe doable. But KKR was like नहीं भाई हो गया, तुम लोगों को जितना खेलना था खेल लिया. Now the score is closed and they closed it and it was a win by 4 runs. Still a match of 208 chased up to 204, just second day of IPL. Yeah, this is pure entertainment. This is what we love and this is why the sport is so beautiful. Of course हम लोग को ये ऐसे crazy matches, बड़े matches देखने ही मिलते हैं IPL में, but usually it's a bit more later into the season. अभी तो start ही इतना optimistic और इतना hyped up हुआ है. I'm eager to see what happens more into the IPL. Of course, you guys can tell us what are your thoughts and what are your predictions for this season and mention it in the comment section.
So thank you so much, guys, for making us a part of your day. We'll meet every day probably now as IPL is going on, and let's just see what happens and enjoy the beautiful sport. Bye bye.